Hello everyone, welcome back. So till now I think we are able to successfully discuss our first unit where we understood all what is accounting all about and why we do accounting and what is accounting cycle, and actually they will understand how we do the accounting, right? Next again in second unit, very important unit, we covered all accounting concepts, conventions and principles there, how they are actually helping us to maintain these books of account and prepare our books of account, right? Now actually we can start the journal entries, but journal entries is separately unit in the second chapter accounting process. There I will be discussing elaborately with the sums. But here I am just giving you the background of journal entries. Why? Because whatever I'm discussing now for journal entries as a background, this is actually the process which will help us to understand the following chapters called capital expenditure, capital revenue expenditure, and one more thing called contingent asset and contingent liability. So for these two units, we should actually understand the background of how actually we are making the entries. Clear, guys? So once we are aware of how we are able to make the entries, then we will discuss that background, all these uh, methods to make. There are actually two approach or two methods to make the journal entries. We'll be discussing that in short time. Once we are discussing those, when we have had the discussion of those entries, then actually we can discuss elaborately what is capital revenue expenditure and the contingent asset and contingent liability. Why I am not taking journal entry with sums? Because this is elaborately there in second chapter, separate unit for journal entries. But again, why we are discussing here is this will actually act a base for your upcoming two units, capital and revenue expenditure, and even contingent asset and contingent liabilities. So actually it's helpful for me to discuss that, because there are certain things you should avoid to understand properly what actually is capital revenue expenditure and what is contingent asset and contingent liability. So don't confuse. So as of now we're discussing actually how to make the entries, how to pass the entries. This will be again I will be discussing shortly when I start the accounting process second chapter. There will have a separately journal entry there, general as a chapter, separate unit there in that chapter. Then again we'll be discussing that. Okay. So as of now we can get the discussion for how to pass the entries. Okay. Yeah guys. So now if you remember, at the last class we discussed something called dual aspect, correct? We discussed something called dual aspect concept there, right guys? So this concept actually we concluded after discussion from this concept key. This is a concept where it says key for every business transaction there will be two aspects, correct? For every business transaction there will be two aspects. So both can be of business, or at least one will be of the business. And again we got, due to that accounting equation which says that assets will be equal to your capital plus liabilities, correct? So now actually this concept is actually giving us the base for to make the journal entries, understanding guys? So when we see how to make a journal entries, we got two approaches, we got two methods, I can say. Two methods to make the journal entries. When we see these two methods guys, stay focused guys. When we see these two methods, one is called traditional approach. One is called traditional approach and another is called modern approach. Clear guys? So there are two methods to make it. So let us make it clear guys. These methods are to know how to make entry. How to make the entry. So journal entry is the first process where actually something we do recording, we generalize the entries. So how to make the entry, we got two methods, traditional method and modern method, modern approach and traditional approach. So from this both approach, entry will be same, entry will not change guys. Let me make you clear again. From the both approach we'll get the
same entry, will get the same entry will not change, from the both the approaches. So there is like घर जाने के लिए दो रास्ते हैं, पॉसिबल रास्ते से जाना जाते तो घर ही we'll go to our own home, we will not get to the another home, we have two ways, just it. So same way to make the entry we got two methods, but entry will be ultimately the same from the both the methods. There will be no change in the entry. Understanding guys? So actually we have to understand this both the method, and so that after understanding this both the method we will be able to learn actually how the entries are formed. Understanding guys? But to make this entries, this is our basic concept which will be helping dual aspect, where we concluded there by discussing this concept. We concluded by this concept, for every transaction there will be two aspect, we have to get those two aspects. One will be something called debit, and another will be something called credit. So this, which one is debit, which one is credit, we'll get to know from these two methods. And both the methods will give same debit, both the methods will give same credit. Just we have two options to follow. Clear guys? Now let us understand one by one. First we will be discussing elaborately for traditional approach. Clear guys? Now when you see what is as per the traditional approach, we divided everything into account. So we got types of accounts here. Now it is the time to discuss what is account. What is an account? So if you remember our basic discussion where we discussed few terms like accountant, accounting, accountancy, and account, right? So there I told account is a statement. Which is giving the information for helping us to analyze and giving the information for particular nature of transaction. If it for cash account, this is the account which gives the details of cash transaction. Salary account, this is the account which gives the details of salary transaction. Rent account, it gives the detail for rent. Understanding guys? So particular account, it has its own name before that account. That name will have some nature of transaction, and that account will give the full details of those transactions. Clear? That is an account. But as per traditional approach, our discussion start with accounts in types of accounts in traditional approach. In traditional approach, we got two types of accounts. Your one is personal account. Another one is impersonal account. Impersonal account guys. Now when we see the personal account, here we got the persons involved, that can be both artificial or natural. So when we see the personal account, we got again divisions which has three divisions there. Understanding guys? So first one is someone called natural person. The next one is someone called artificial person. And next is someone called representative personal. Understanding guys? So once again, you stay focused guys. So what all we are discussing, once again I am saying we are discussing how to make the entries. Once we are aware of this, we can move to the unit called capital and revenue expenditure. And because this discussion will help us to understand in detail capital and revenue expenditure. Without this discussion, we can't actually understand few things of capital and revenue expenditure. That's the reason I want to discuss this before it. And once we are have discussion of this, what we are discussing now, then we will actually able to know how to make the entries. And when we see how to make the entries, we got two methods. One is some first which we actually follow earlier, was called traditional method. Still we follow this, and we have one more called
modern approach. From both the approaches, entry will be same, guys. We'll get same entry. We'll get same entry. There will be no changes in entry. Same debit, same credit. Nothing will change. But we got two methods to do. So we started our discussion with to know what is traditional approach. And in traditional approach, when we see everything is divided into account. When we see how many types of accounts are there, two types, personal and impersonal. And in personal account, when we see, we got natural person, artificial person, and representative person. We got natural, artificial, representative person. When we come to impersonal, we got two accounts, guys. We got two accounts. One is your real, another is your nominal. Clear, guys? So when we see, as per this concept, as per this approach, we got personal account, we got real account, and we got nominal account. We got three accounts, guys: personal, real, nominal. And when we come to personal, we got certain bifurcation there: natural person, artificial person, and representative person. Let us discuss all types of account here. Let us discuss all types of account. So when I come to personal account actually involve the persons. Will involve the persons. That person can be natural person like Ram. Understanding, guys? Sham. So these are natural person there. When we come to artificial personal account, these are persons. These are legally existing, but they are not actually came by the natural birth. They came by the legal birth. Understanding? They came by the legal birth. The law has given their birth, but these natural persons came by natural birth, by biological process. I'm trying to say you. But when we come to artificial person, they didn't came from biological process. They came from the artificial process. Like from by the law, they came. They had their existence. Example is A Limited is a company. Understanding, guys? A Limited or A and Co. So these are what they got their existence because of the act, the Partnership Act, Companies Act. They got the existence, companies, firms, LLPs. So this all will come under artificial person. Clear, guys? So these two are the persons, artificial persons, LLP. For example, also I can take an LLP. When we come to now representative, guys, representative are, when I come to representative personal, guys, representative personal are the persons, natural persons or the artificial person, but their name is not coming directly into the books. Their name is not coming directly into the books. They are actually representing one or the other account. Understanding, guys? They are representing one or the other account. For example, if I'm having outstanding salary account, when I see outstanding salary account, what you understand? Outstanding means we didn't paid, we have to pay. As of now, that is the meaning. You can take it. Outstanding is something which we are liable to pay. We didn't pay it. We received the service, we have to pay. So outstanding salary is of employees. Outstanding salary will give to employees, right? So there were 10 to 12 employees. We didn't pay the last month's salary. So but we have to account it as per accrual concept, right? So we are accounting it by opening separate account called आउटस्टैंडिंग सैलरी देने का है बोल के मालूम होता है. सी आउटस्टैंडिंग सैलरी विल अंडरस्टैंड एक्चुअली सैलरी देने का है बोल के. बट दिस आउटस्टैंडिंग सैलरी से क्या मालूम हो रहा है कि वी हैव दी our liability to pay for 10 to 9 employees. We are actually not writing 9 employees name. We are writing that group of 9 employees representing one account called outstanding salaries. Understanding it? So this is called representative personals. This is called representative personal. Clear, guys? So once again, so this all discussion we are discussing how to make the entries. We got two methods there. One is traditional approach, second is modern approach. We started our discussion with traditional approach. When we see traditional approach, they divide everything into accounts. When we see what two types of account they have, personal, impersonal. In personal we got two, real and nominal. So whole we got three types of account: personal, real, nominal. And when we see in personal account, it means it has, if personal account is only for person. That person can be natural person by biological birth. That person can be artificial person by
artificial but who came there, they got their existence because of law. And third one is representative personal. This can be artificial or natural, but they are representing some accounts in our books. Understanding, guys? So that is your representative personal. Clear, guys? Now when we come to impersonal accounts, first bifurcation is real account. In impersonal, we got first one called real account. What is real account, guys? Real account consider all asset account, all assets account, all asset account. But this is incomplete definition. Understanding, guys? So I am saying real account consider all asset account which are really existing, which are really like what we can their handed over existence, like machine, furniture. These all are actually a real account. Clear? But even intangible assets, again you have their goodwill and all, those will also come under real. That the reason I'm not saying which are only existing, but real account is something which consider all the assets account, which consider all the assets account. But I have to modify this because there will be confusion now. If I'm saying it consider all the asset account, focus guys on discussion. If I'm considering really something which is considering all asset account, now there is something called debtor. There is something called debtors. Debtors are who, from whom entity should receive the money. एंटिटी को पैसे आने का है, वो बंदे को डेटार बोलते हैं. डेटार इज असेट. यस, डेटार इज एन असेट. उस पे हक के अपना वो पैसे देने का है. बट इफ आई से रियल अकाउंट्स आर ऑल असेट, देन डेटार राम, you should pay me. Ram should pay me. Now Ram is person or a real account or natural personal account. Then there will be confusion, because when I say real include all the assets, debtor are also my assets. So in debtor there will be persons, artificial person, natural person, because debtor मतलब जिससे आने का है. आने का मतलब कोई बंदे रहना ना, दीवार से तो नहीं ले सकता पैसे. There have to be someone to give me. That someone can be banks or some artificial persons, companies and all, or there can be persons, Ram, Sham, Govind, Joe, whatever persons are there. Natural artificial persons will there who are actually should give me, they are my debtor. So if I say all assets are real, then debtor का confusion चालू हो जाता कि वो person में आता है या real में आता है. किस में आना guys? That has to be in person. That's the reason my real account meaning will change now. All asset except debts. There is except debts. So real accounts are all assets account except debts, because debt is something which has to be received or paid. That received or paid will be always artificial or natural person or representative person. So they are actually sitting in personal account. So personal account you cover कर ले रहा. At the reason we have to exclude that from real account. So what is real account definition, guys? All assets account except debts. Clear? When we come to nominal account, guys, these are actually your expense and income accounts. Expense and income account. Expense and income accounts are the nominal account. Clear, guys? So when we see the aspect traditional approach, we got personal, real, nominal. Personal is considering all the persons who are involved in from the business, because business is doing transaction with persons, right? Business can transact with the artificial person, business can transact with a natural person, business can transact with its own group of individuals like employees, creditors. So they are actually the one who are having their transaction with the business. So if they're coming into any kind of person, they will sit in personal account. If they are having if they're not coming there, they will come to impersonal. Impersonal can be two, that can be your real account or that can be your nominal account. In real we cover all the assets account except your debts, but debts are debt again, because it will be because of the person. That the reason debt are covered into personal account. So we remove from our real account. And when we come to nominal account, these are recurring nature of transaction. In nominal we get recurring nature. Like expenses we have recurring, right? Salary हमेशा देना पड़ेगा, rent हमेशा देना पड़ेगा. These are recurring expenses. When we come to income also, sales and all, these are recurring expenses. Purchase and all, sales and all, these are recurring. ये business में चलते रहते हैं. So nominal account, all the transactions will come of income and expenses which are of recurring nature. Real account are somewhere non-recurring
and these are actually the assets for the entity. So this is the all types of accounts which we consider in the traditional approach. Now we'll start our discussion actually how we will make the entry in traditional approach. Okay. Give me a minute. Yeah. So when we see in traditional approach, so when we see the traditional approach, we got some rules. We got the rules. We got the rules for making entry. We got the rules for making entry. They are actually called golden rules. They are actually called golden rules of accounting. They are actually called golden rules of accounting. So based on types of account, we got the rule. So we, as we discussed, we got these three types of accounts, right? Personal, real, nominal. And we got the rules for this account. We got the rules for these accounts. Clear, guys? So when we discuss the rule for personal, we got debit rule, we got credit rule. For real also we'll get debit rule, we'll get credit rule. For coming to nominal also we get debit rule, we'll get credit rule. Now let us have some little discussion what is this debit and credit. Guys, see, debit and credit has no constant definition because debit and credit are actually subjective terms. जो मेरे लिए डेबिट है तुम्हारे लिए क्रेडिट रख सकता, सो अपोजिट पर्सन के हिसाब से इट विल चेंज, ऑब्वियसली इट विल चेंज. One debit same debit can't be both for two persons. That's the reason natural fixed definition we can't give for debit and credit. No one can give for debit and credit and heavy definition. But the debit and credit can understand by the transaction depend on the person के transaction के हिसाब से उसके debit and credit को समझा जा सकता, but a constant definition नहीं बना सकता. These are the terms which actually shows what it's receiving, what it is giving, what actually is owning, what actually it's owing. So this debit credit only shows कि actually what transaction we are into in and what we are having our something called assets, obligations, income, expenses. सिर्फ समझा सकता है ये अंडरस्टैंडिंग है. So there is no fixed definition. So when we see as per personal account, debit कब करो बोलता है, debit the, when we say for debit it says debit the receiver, it says debit the receiver because personal account में persons involved है, right? So इसमें इसके अंदर persons involved है. So that's the reason it says the receiver and credit the giver. Credit the giver. तो persons है ना, रिसीवर गिवर मिल जाते वहां पे, तो उनको डेबिट क्रेडिट करो बोला. तो डेबिट किसको करना, हु इज रिसीविंग. क्रेडिट किसको करना, हु इज गिविंग. क्लियर गाइस? एंड व्हेन वी कम टू रियल, इट सेज डेबिट व्हाट, debit what comes in and credit what goes out. Credit what goes out. This is the rule for real account. When we come to nominal account, it says debit all expenses and losses. And when we come to credit, it says credit all income
and gains. So this is the rule for all types of account in traditional approach. So it says debit the receiver, credit the giver, and it says debit what comes in, credit what goes out, and for this it said debit all expenses and losses, and here it said incomes and gains. So based on this rule, we can get the what to debit and what to credit from each and every transaction. So for every transaction, as per dual aspect. So for every transaction, there will be two aspects. That two aspect, one will be credit, one will be debit. So we have to apply the modern approach and see which is the debit aspect and which is the credit aspect and make the entry. Understanding the framework, guys. How to make the entry? पहले transaction लो. ट्रांजैक्शन में देयर विल बी टू अफेक्ट एज पर डुअल एस्पेक्ट. तो दो अफेक्ट पकड़ो कि ये दो अफेक्ट्स क्या है इस ट्रांजैक्शन में. तो जैसे दो अफेक्ट पकड़े वो दो एस्पेक्ट कहीं ना कहीं ये तीनों में बैठेंगे. वे इट कैन बी सिट इन एनी थ्री. तो दो एस्पेक्ट को तुम कहीं ना कहीं तीनों में से एक में बिठाओ, फिर उसके रूल्स अप्लाई करो, वो डेबिट है क्रेडिट है मालूम हो जाता. Understanding? So what is the process to make the entry from traditional approach? First, understand the transaction. पहले transaction को समझो हो रहा क्या transaction में. Without understanding transaction, you will not get correct entry, guys. So what I want to say is, तुम entry सही लाना, fast लिखना, that is not important. तुम प्रोसेस पे ध्यान दो. एंट्री कैसे बनाना, वो स्ट्रॉन्ग बनाना, तो ऑटोमेटिक करेक्ट एंट्री बनती. फॉर फोकसिंग टू गेट राइट एंट्री, फास्ट लिखेंगे, फास्ट पढ़ेंगे सही, दैट इज नॉट द वे. सी तुम कितना ही प्रैक्टिस कर लो वैसा यू नॉट हैव, बिकॉज तुम पूरे ट्रांजैक्शन कवर नहीं कर सकते. वन और द अदर विल मिस विच कैन बी इन योर एग्जाम. और एग्जाम में पूरे कवर हो गए थे. प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्लाइंट को चाला ये क्या था ट्रांजैक्शन जो तुम्हारे बुक्स में नहीं था, तब क्या करते. सो यू हैव टू हैव दिस ग्रिप ऑन दी प्रोसेस. कैसे बनाना है वो ग्रिप बनाओ. सो बनाना कैसे है? फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन को समझो हो रहा क्या. विदाउट अंडरस्टैंडिंग ट्रांजैक्शन इवन दे आर गेटिंग राइट एंट्री, कहीं ना कहीं उसको तुम गलत करेंगे फिर. सो फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन. हो रहा क्या ट्रांजैक्शन में, बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शन हुआ ना, हो रहा क्या, पैसा आ रहा, कुछ भी, यू विल हैव सम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द ट्रांजैक्शन. सो गेट दैट अंडरस्टैंडिंग. सेकंड, फ्रॉम दैट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सर्च फॉर दैट टू एस्पेक्ट. दो एस्पेक्ट क्या है वो जो वो ट्रांजैक्शन में है. मिनिमम दो तो पक्के रहेंगे. सर्च फॉर द टू एस्पेक्ट. दो एस्पेक्ट मिल गए, then you see which approach are following, traditional or modern. So ये दो तो पक्का रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग एंड सेलेक्टिंग टू एस्पेक्ट. हर दोनों मेथड में भी रहेंगे. फ्रॉम हियर इफ अप्लाइंग ट्रेडिशन में कि हर चीज अकाउंट में बैठे. सो ये दो एस्पेक्ट को कौन से अकाउंट में गिरते देखो. सो वन कैन बी रियल, वन कैन बी नॉमिनल, बोथ कैन बी रियल, बोथ कैन बी नॉमिनल, बोथ कैन बी योर पर्सनल रियल, रियल नॉमिनल, एनी कॉम्बिनेशन. सो पहले ट्रांजैक्शन समझो, देन understand what are get the two aspect. Then this two aspect, if you are following traditional approach, make that classification in which account they are coming. Once you are aware कि ये कौन से अकाउंट में आ रहे हैं, रियल, पर्सनल या नॉमिनल, फिर उसके रूल्स लगाओ कि उसको डेबिट करना है क्रेडिट करना. अगर पर्सनल में आ रहा वो रिसीवर है गिवर है, देखो डेबिट है क्रेडिट बोलो. रियल में आ रहा अंदर जा रहा बाहर जा रहा, देखो इन आउट, डेबिट है क्रेडिट करो. नॉमिनल में आ रहा एक्सपेंस है इनकम है, देखो डेबिट है क्रेडिट करो. Understanding, guys, I am repeating last once again. How to make the entry in traditional approach? Understand the transaction, get the two aspect. After getting the two aspect, keep in which account they fall. In which account they fall. They fall in one or the. भैया ऐसा कौन सा ऐसा एस्पेक्ट नहीं जो ये तीनों के बाहर है, पक्का है तीनों में से एक में गिरेगा वो. Just get that two aspect and keep them in one or the other classification of account. Once you are fixing which this is this type of account, then apply the rule of those पर्टिकुलर नेचर. अगर वो पर्सनल के अंदर आ रहा तो इसके रूल्स लगाओ एंड गेट द डेबिट है या क्रेडिट है. अगर रियल में आ रहा तो रूल लगाओ, डेबिट है क्रेडिट है निकालो. सो वन विल बी डेबिट, वन विल बी क्रेडिट इन एनी कॉम्बिनेशन. पर्सनल रियल, रियल नॉमिनल, रियल भी रह सकता, पर्सनल भी रह सकता है. एनीथिंग इट कैन बी. मेक दैट रूल, अप्लाई दैट रूल, गेट द डेबिट और क्रेडिट एंड मेक द एंट्री. होप आई एम क्लियर विद द प्रोसेस. Focus on the process, build your grip on the process, get comfortable with the process. एक बार प्रोसेस सही है ना, लाखों एंट्रीज विल गेट करेक्ट. वरना तुम प्रोसेस को इज्जत नहीं देके, प्रोसेस पे कॉन्फिडेंस नहीं लाके, प्रोसेस पे कंफर्ट लेवल नहीं लाके एंट्रीज प्रैक्टिस करते जा रहे. परचेज हो तो ये होता, सेल हो तो ये होता,
ये इसको सेल में ऐसा करना, क्या ये एंट्री कोई कैश एसिड होता, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस इफ फोकसिंग ऑन एंट्रीज जस्ट ये इसको करना इसको करना, you will pay for this. I'm saying you because entries are only basic level in your accounting. अगर entries के अंदर have a good time here, अगर entries perfect बन गए ना, then you are actually top of accounts. entries बनाने आ गए तो कुछ काम नहीं है, आगे यही बने सो विल क्लासीफाई विल समराइज, वो पढ़ते जाते आगे बढ़ते जाते, खाली entries कैसे आते सीखो. Clear guys? Now I will take an example also. We'll have our example. What example we take? Basic example, Sham or the X started business with 5 lakh as with 5 lakh cash, with 5 lakh cash. तो एक्स टू इन्वेस्ट करा, एक्स से क्या करा इन्वेस्ट करा, एक्स से क्या करा गाइस इन्वेस्ट करा बिजनेस में, टू स्टार्ट अ बिजनेस विथ 5 लाख कैश ट्रांजेक्शन हुआ. तो व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप, अंडरस्टैंड द ट्रांजेक्शन. क्या समझ में आ रहा है इससे, एक्स क्या करा बिजनेस स्टार्ट करा 5 लाख बिजनेस में डाल के, do this your understanding. एक धंधा स्टार्ट करा 5 लाख बिजनेस में डाल के इन्वेस्ट करके. सो व्हाट आर द टू एस्पेक्ट. नाउ सेकंड स्टेप इज योर गेट द टू एस्पेक्ट. व्हाट इज द टू एस्पेक्ट गाइस? See, one aspect whenever you have cash, there one aspect will be cash. One aspect will be cash. What is second aspect now? बिजनेस स्टार्ट हुआ, that cannot be the accept. That is an बिजनेस स्टार्ट हुआ 5 लाख कैश है, बट ये 5 लाख कैश कौन दिया गाइस, एक्स दिया. एक्स कौन है फिर, ओनर है. ओनर है बोल तो ओनर इज अनदर एक्सेप्ट, और फॉर ओनर वी गॉट टू अकाउंट्स कॉल्ड कैपिटल और ड्रॉइंग. सो अनदर विल बी योर कैपिटल, अनदर अकाउंट विल बी योर capital, another account will be your capital, another account will be your capital. So you got one aspect as cash, another aspect as the capital. तो दो चीजें हैं जो अफेक्ट हो रही है ट्रांजैक्शन से. पहले ट्रांजैक्शन समझो, दो चीजें पकड़ो, उसके बाद ट्रेडिशनल अप्रोच हो तो अकाउंट्स में क्लासिफाई करो, रूल लगाओ, एंट्री बनाओ. मॉडर्न में है विल सी कैसे करना क्या करना. क्लियर? नाउ व्हेन वी आर इन ट्रेडिशनल अप्रोच, कैश डिस्कशन फॉर कैश गाइस. नाउ कैश इज व्हाट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल. कैश क्या है बिजनेस के लिए, खर्चा है, खर्चा नहीं है तो नॉमिनल तो नहीं बन. कैश क्या है, रिसीवर की पर्सन ही नहीं है वो. कैश एंड असेट, आई टोल्ड ऑल असेट्स आर रियल. तो कैश इज व्हाट नाउ, रियल. कैश विच अकाउंट में आ रहा है ये गाइस, रियल. कैश किस में आ रहा, रियल. कम टू कैपिटल, कैपिटल किस में आ रहा है गाइस, कैपिटल इज रिप्रेजेंटिंग एक्स, राइट. कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस, एक्स को. कैपिटल रिप्रेजेंटिंग एक्स. सो दिस एक्स इज व्हाट, ओनर. ओनर मतलब इंसान ना, पर्सन. इंसान है ना, पर्सन. तो कैपिटल अकाउंट इज द पर्सनल अकाउंट. तो वी गॉट कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड पर्सनल, वी गॉट कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड पर्सनल. अब देखो रूल्स कैसे लगाना. रियल अकाउंट क्या बोलता है, यू सी इन और आउट, अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है. तो एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद 5 लाख कैश. तो कैश तो है बट कैश का मूवमेंट देखो बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस को कैश अंदर आ रहा या कैश बाहर जा रहा, इन या आउट. कैश इज कमिंग इन, फॉर बिजनेस कैश इज कमिंग इन. तो फॉर रियल के हिसाब से दिस इज कमिंग इन. तो इन मतलब क्या है गाइस, इन मतलब क्या करना, डेबिट. इन मतलब क्या करना, डेबिट. सो वी हैव टू डेबिट दिस एस्पेक्ट, वी हैव टू डेबिट दिस एस्पेक्ट, वी हैव टू डेबिट दिस एस्पेक्ट. तो कैश क्या होता है गाइस, कैश विल गेट डेबिट, कैश विल गेट डेबिट. अंडरस्टैंडिंग. नाउ सी, अब भैया डेबिट मिल गया क्रेडिट ही रहता, ऐसे नहीं. दिस इज नॉट द प्रोसेस. सेविंग क्यों आगे, एक डेबिट मिल गया दूसरा क्रेडिट, या क्रेडिट मिल गया तो दूसरा डेबिट ही चेन. नो, अंडर ग्रिप रहना प्रोसेस पे. प्रोसेस में भी वही दिखना ना. सो अप्लाई दिस प्रोसेस. कैपिटल, कैपिटल अपन क्या बोले पर्सन में आता, तो इसका क्या रिसीवर या गिवर, रिसीवर या गिवर. सी ना, एक्स रिसीव कर रहा है या दे रहा. सी ना, एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ 5 लाख कैश. तो बिजनेस को एक्स क्या कर रहा, दे रहा है, या बिजनेस से रिसीव कर रहा है, बिजनेस को दे रहा. वो ही इज गिविंग कैश टू बिजनेस. बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहा तो ही विल बी रिसीवर, दे रहा तो गिवर, ही इज द गिवर. गिवर को क्या करना गाइस, क्रेडिट. क्या करना, क्रेडिट. सो दिस इज कॉल्ड हिज गिवर and we will be crediting, and we will be crediting, and we will be crediting. So this is how we actually make the entries. So entry क्या आती है guys, entry will be now cash account debit,
कैश अकाउंट डेबिट। टू प्रोसेस है, पढ़ेंगे टू कैसा है, स्पेस देना, वो सब जनरल चैप्टर में आई विल रिपीट इट, अभी खाली समझाना मैं। टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, अंडरस्टैंडिंग गाइस विथ सो एंड सो अमाउंट, विथ सो एंड सो अमाउंट। अब भैया this is the way to make the entries, understanding guys, so whatever entry you have, what is the process I told, understand that I'm writing this here, see I will have my 5 steps there. Understand the transaction, get the two aspect, if you are following after getting two aspect, if you are following traditional approach, classify them into account, then apply that specific account rules, then and you will get your debit or credit and make the entry. This is your 5 steps in traditional approach. What? Understand the transaction. Second guys, understanding transaction के बाद क्या है? Understand the transaction. Second one is your get the two aspect. Get two aspect अपने कैसे मिले? One is capital and one is your cash. So get this two aspect. Then third will be your, if you are following traditional approach, see in which account they fall, because you know the meaning of account. पर्सनल में पूरे इंसान आते हैं, नेचुरल या आर्टिफिशियल, रियल में पूरे एसेट्स आते हैं, एक्सेप्ट योर डेट्स, नॉमिनल में पूरे खर्चे और इनकम आते हैं। तो वो क्या है उसके हिसाब से अकाउंट में बिठाओ, फिर उसके रूल अप्लाई करो, फिर डेबिट क्रेडिट मालूम करो, एंट्री बनाओ। अंडरस्टैंड, गेट द टू एस्पेक्ट, then apply which classify them into accounts, apply that specific account rules and get the debit credit and make the entry. This is the 5 step. If you are having grip on this 5 step, you will have the, you will actually make whatever transaction is there, you will make the correct entry. Clear guys? I will take you one more and few example. I will take few example. We can discuss few example here again. Yeah, so another example, we can have some discussion with example, so that एक बार ये method clear होगा ना guys, so we will be very comfortable to understand further flow of our classes. To get your comfort here now, yeah, so when we have next example is purchase building for 3 lakhs, purchase building for 3 lakh, okay, 3 lakh cash, 3 lakh cash. So फर्स्ट स्टेप क्या है? अंडरस्टैंड द ट्रांजेक्शन। समझो ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है भैया, बिल्डिंग खरीद रहे 3 लाख देके, समझ गए कि पैसे गए, बिल्डिंग गई, तो बिल्डिंग खरीद रहे, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। नाउ व्हाट आर द टू एस्पेक्ट? टू एस्पेक्ट निकालो पहले। सो व्हेन एवर आई टोल्ड देयर इज अ कैश, ऑटोमेटिकली वन एस्पेक्ट विल बी योर कैश अकाउंट, एंड व्हाट इज द सेकंड एस्पेक्ट? सेकंड एस्पेक्ट देखो, परचेज बिल्डिंग फॉर 3 लाख। सो व्हाट इज द सेकंड एस्पेक्ट? वी कैन कंसीडर परचेज, वी कैन कंसीडर परचेज यूजर एस्पेक्ट, बट परचेज किसकी कर रहे हैं? बिल्डिंग की, तो एक स्पेसिफिक चीज की कर रहे, देन दिस इज योर सेकंड एस्पेक्ट कॉल्ड बिल्डिंग। सेकंड एस्पेक्ट विल बी योर बिल्डिंग। क्लियर गाइस? नाउ आफ्टर सेकंड स्टेप, व्हाट इज द थर्ड स्टेप? अप्लाई, क्लासिफाई देम इनटू अकाउंट। इफ यू आर फॉलोइंग ट्रेडिशनल, क्लासिफाई देम इनटू अकाउंट। So just now we discussed cash is real account. Cash is because that's an asset. Cash is real account. When we come to building, guys, what is building? Building क्या है? Business के लिए building भी asset ही है, because that is helping us to run the business. Business को revenue generate करने help कर रहा, so asset ही है, तो building is also real account. Building is also, see now we got both the real. तो there can many combination. पहले क्या आया था? Personal real, अभी क्या है? Real real. Nominal भी आ सकता है, real nominal भी आ सकता है, real personal भी आ सकता है, नॉमिनल परसेंट भी आ सकता है, एनी कॉम्बिनेशन इट कैन बी। सो रियल। व्हेन यू सी कैश, कैश क्या आ रहा है देखो, परचेज बिल्डिंग फॉर 3 लाख कैश। कैश अंदर, बिजनेस क्या करा? बिल्डिंग खरीदा, तो कैश अंदर जा रहा बाहर जा रहा गाइस? कैश अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा? अंदर आ रहा या बाहर जा रहा? बिल्डिंग खरीदने से कैश इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट, कैश इज
गोइंग आउट। जब आउट है बोल तो क्या करना बोला, रूल क्रेडिट। आउट है बोल तो क्या करना बोला, रूल क्रेडिट। सो वी विल क्रेडिट नाउ, सो वी विल क्रेडिट, सो वी विल क्रेडिट। अंडरस्टैंडिंग गाइस? व्हेन वी कम टू बिल्डिंग, व्हेन वी कम टू बिल्डिंग, बिल्डिंग इज आल्सो रियल। अब रियल को चिन्ह आउट ही करना है। बिल्डिंग आ रही, अंदर आ रही, राइट गाइस? कैश जा रहा, बिल्डिंग आ रही, कैश जा रहा, बिल्डिंग आ रही, तो बिल्डिंग इज कमिंग इन। इनके लिए क्या करना है गाइस, डेबिट। इनके लिए क्या करना है, डेबिट। इनके लिए क्या करना है, डेबिट। सो this is in and we will be debiting, and we will be debiting, and we will be debiting। एंट्री क्या बनती है नाउ, एंट्री विल बी योर, डेबिट क्या है, बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू व्हाट गाइस, कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। So this is how we will make the entries। So again I am saying you get your comfort on the process। प्रोसेस क्या है, आराम से भैया। फिर एग्जाम में इतना सोचते भैया, नहीं 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 नहीं, इफ आई प्रैक्टिसिंग दिस प्रोसेस, तो ये प्रोसेस सेकंड्स में होता। टाइसन समझो, टू एस्पेक्ट निकालो, अप्लाई करो और अपना रूल बोलो, एंट्री विल गेट इन टू सेकेंड्स। ये अभी एक्सपेंड कर रहा बोलकर मेरे को तो इतना टाइम लग रहा। वंस यू आर हैविंग द प्रोसेस को फास्ट कर करके प्रैक्टिस करके प्रोसेस विल बी विद इन नो सेकंड विल हैपन। पर अगर तुम प्रोसेस को ध्यान नहीं दिए, यू विल स्ट्रगल। एंट्रीज को फोकस मत करो, एंट्री इज द आउटकम गाइस। यू हैव टू नॉट फोकस ऑन आउटकम, यू हैव टू फोकस ऑन दिस प्रोसेस। प्रोसेस पे कंफर्ट लाओ, आउटकम ऑटोमेटिक से ही आता। अगर प्रोसेस में गड़बड़ है, आउटकम ऑब्वियसली गड़बड़ आता है, एंड यू विल फील कि मेरे को अकाउंटिंग नहीं आ रही। अकाउंटिंग वैसा नहीं है। अकाउंट आउटकम पे फोकस मत करो, यू फोकस ऑन द प्रोसेस। एंट्री कैसे बनाना अच्छे से समझो, ग्रिप लाओ ये क्लासिफिकेशंस पे, रूल्स पे प्रैक्टिस करके प्रोसेस को स्ट्रांग बनाओ, देन ऑटोमेटिक एंट्री तो आउटकम है। क्लियर? आई थिंक वी कैन डिस्कस वन मोर एग्जांपल, और एक एग्जांपल लेंगे, देन वी कैन मूव अहेड। So another example we can take, sold goods या पेड सैलरी या पेड रेंट, कुछ भी ले लो। पेड रेंट 1000, paid। See, this chapter is not to cover all the entries। जनरल एंट्री यूनिट है, विल कवरिंग एवरीथिंग दे, बट यहाँ पे खाली एंट्री कैसे बनाते हैं, आई एम जस्ट मेकिंग यू हेल्प। फिर रिपीट होगा उधर, डोंट वरी, बट ट्राई टू गेट दिस। मैं दो बार भी इसलिए रह रहा है कि तुम्हारे को प्रोसेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं यहाँ पे भी बोल रहा, वहाँ पे भी बोलूंगा, नो प्रॉब्लम, बट you should get this understanding and grip on this process। clear? paid rent 1000 in cash, obviously cash में pay कर रहे हैं, so obviously we'll have one aspect as your cash, one aspect as your cash, and another will be what guys, obviously rent, another will be rent। so as discussed, rent cash will be your real, and when you are paying cash will go out, cash will go out। so this is going out, out के हिसाब से we have to credit, out के हिसाब से we will credit, out के हिसाब से we will credit, we will credit। when we come to rent, when we come to now rent guys, rent is what, rent क्या है, किराया क्या है बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए सोचना है, ओनर के लिए नहीं। बिजनेस रेडी कौन सा, हर चीज बिजनेस के लिए। रेंट क्या है गाइस बिजनेस के लिए, रेंट इज खर्चा, ऑब्वियस राइट। तो रेंट इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस बोलो तो विच अकाउंट गाइस नाउ, नॉमिनल। एक्सपेंस मतलब नॉमिनल से रियल नॉमिनल का कॉम्बिनेशन आ गया। तो नॉमिनल के लिए क्या है ये, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या करो बोला, नॉमिनल डेबिट। सो वी विल बी डेबिटिंग, वी विल बी डेबिटिंग, वी विल बी डेबिटिंग। क्लियर गाइस? वी विल बी डेबिटिंग नाउ। क्लियर? अब एंट्री बना लो, सिंपल। क्या बनती है एंट्री, डेबिट वाला लिखो, रेंट अकाउंट टू डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। Clear guys? So in the traditional approach, what is the thing to follow? Understand the transaction is the first step, second step guys,
आफ्टर अंडरस्टैंडिंग गेट द टू एस्पेक्ट, ये टू एस्पेक्ट एक बार निकालने में माहिर हो गए, दिस विल टेक सम टाइम, एक्सपेक्ट एक बार निकालने में, बिकॉज दिस टू स्टेप आर कॉमन इन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, मॉडर्न में तो ट्रेडिशनल होता है, ऐसे समझना जरूरी है, दो एस्पेक्ट निकालना जरूरी है, और दोनों में भी दो एस्पेक्ट सेम रहते, चेंज नहीं होते। अब यहाँ से यू विल अप्लाई ट्रेडिशनल और मॉडर्न, ट्रेडिशनल अप्लाई कर रहे तो अकाउंट्स में क्लासिफाई करो, रेस्पेक्ट टू रूल्स लगाओ, डेबिट क्रेडिट निकालो। मॉडर्न के अंदर विल सी नाउ आफ्टर दिस विल स्टार्ट मॉडर्न ओनली। मॉडर्न में देखो क्या क्या हो रहा, देन विल अंडरस्टैंड। क्लियर गाइस? This is the way to make your entries. Now we'll start our discussion with modern approach. Yeah guys, so when we come to now next approach, that is a modern approach. So I told you at the beginning only, दोनों approach से answer will be same, आंसर विल नॉट चेंज, दिस इज द मेथड टू फॉलो, वो भी फॉलो कर लो, ये भी फॉलो कर लो, जो फॉलो कर लो चलेगा। सो एज पर मॉडर्न अप्रोच, व्हेन वी सी व्हाट इज मॉडर्न अप्रोच नाउ, वो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या करेगा, सब चीज को अकाउंट में क्लासिफाई कर दिया, फिर रूल्स बना दिया, ये भी रूल्स बनाएगा बट ये अकाउंट्स में फॉलो नहीं करा, तो ये अकाउंट्स में क्लासिफाई नहीं करके दे टोल्ड वी क्लासिफाई एवरीथिंग इनटू, वी क्लासिफाई एवरीथिंग इनटू 5 थिंग। भैया उसमें क्या है, ये क्या स्टार्ट हो गया मॉडर्न अप्रोच क्या बोला मालूम, हम हर चीज को 5 चीज में बांटेंगे, वो अकाउंट्स में बांटा था, ट्रेडिशनल मॉडर्न बोला हम अकाउंट्स में नहीं बांटते, वी क्लासिफाई दैट इनटू असेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम, अलग से कैपिटल रखा, capital should be actually part of liability but अलग रखा तो मैं भी अलग रख रहा, understanding? So as per modern approach they told we classify everything into 5, asset, liability, expense, income and capital. तो ऑलरेडी भी डिस्कस व्हाट इज असेट, समथिंग वाज एंटिटी ओन, तो उन्होंने बोला हम हर चीज को 5 में बांटेंगे, दैट एंटिटी के लिए वो असेट तो रह सकता है, लायबिलिटी तो रहता है, इनकम तो रहता है, एक्सपेंस तो रहता है, कैपिटल तो रहता है, 5 को छोड़ कुछ नहीं रह सकता, टोल वेरी क्लियरली, ये 5 को छोड़ के कुछ नहीं रह सकता, इट कैन बी असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस या कैपिटल। वैसे ट्रेडिशनल क्या बोला, इट कैन बी पर्सनल, रियल और नॉमिनल, कुछ भी नहीं रहता इनको छोड़ के, इन्होंने क्या बोला, ये 5 को छोड़ के कुछ भी नहीं रहता, दैट्स फैक्ट, कुछ भी नहीं रहता इनको छोड़ के ऑब्वियसली। नाउ रूल सुना इनका, हाँ रूल नहीं, वी कैन डिस्कस रूल से पहले वन मोर थिंग, एज पर दिस कॉन्सेप्ट मॉडर्न अप्रोच, एज पर मॉडर्न अप्रोच असेट विल हैव डेबिट बैलेंस, ये बोले भाई असेट्स को हमेशा डेबिट बैलेंस ही रहता, assets will always have debit balance, इनके हिसाब से assets will have always have debit balance and expense will also have debit balance, इनको भी हमेशा debit balance ही रहता। when we come to liability it will have credit balance, income will have credit balance, capital भी अच्छी liability है तो इसको भी credit balance ही रहेगा। तो ये लोग क्या करे, पहले 5 चीज में बांट दिए, उनके क्या क्या बैलेंस रहते बोल दिए, assets will have debit balance, liability will have credit balance, expense will also have debit balance, income will have credit balance, capital will have credit balance, ये इनको ये बैलेंसेस रहना, हमेशा यही बैलेंसेस रहते, तो हमेशा asset will have debit balance, expense will have debit balance, liability will have credit balance, income will have credit balance, capital will have credit balance, तो ये हमेशा ये बैलेंसेस ही रहते हैं इनको बोल के बोल दिया। तो अगर ये नेचर 5 नेचर है और इनकी ये बैलेंसेस है, क्लियर। अब रूल एक ही रूल दिए लोग, मजेदार है ये, तो ये भाई साहब ये एक ही रूल बोले, रूल क्या है मालूम, व्हेन दी एबो, गिव मी अ मिनट, या व्हेन दी एबो थिंग्स, that are your 5 things, ये जो 5 है ना इधर में, both are increasing, when they are increasing or above things, above things that which are 5 are decreasing, if they are increasing क्या बोले मालूम, same nature, if they are decreasing
opposite nature, same nature, the decreasing opposite nature. ये क्या समझ में नहीं आया, ऑब्वियसली नहीं आएगा. सुनो इधर, व्हाट दे टोल्ड, इन लोगों क्या से बड़ा अप्रोच क्या बोला, हम 5 में बांट देंगे, ये इनके बैलेंसेस है. और एज पर मॉडर्न अप्रोच इन लोग क्या बोले मालूम, अगर जो भी ऊपर की 5 चीजें है वो बढ़ रहे, एक्सपेंस बढ़ रहा, लाइबिलिटी बढ़ रही, एसेट बढ़ रहा, कैपिटल बढ़ रहा, व्हेन दे आर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के टाइम पे गिव सेम नेचर, मतलब जो हम इनके बैलेंसेस है बोले ना, उनको वही करो, सेम नेचर दो. अगर एसेट बढ़ रहा तो डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ रहा तो क्या बोला, सेम क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ रहा तो डेबिट, इनकम बढ़ रहा तो क्रेडिट, कैपिटल बढ़ रहा तो क्रेडिट. तो ये इनके बैलेंसेस है, और जब भी ये बढ़ रहे तो वो सेम नेचर ही दो. डेबिट, डेबिट नेचर तो डेबिट दो, क्रेडिट तो क्रेडिट. तो व्हेन दे आर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग सेम नेचर, डिक्रीजिंग अपोजिट नेचर. अगर वो घट रहे, एसेट घट रहा, एसेट का एक्चुअली नेचर डेबिट है, घट रहा तो क्रेडिट. So if I say once again, what is the rule? Rule is, if the they told, if the above items are, above things are increasing, if they're increasing, we have to give the same nature. अगर ये बढ़ रहे तो उनको उनका ही नेचर देना पड़ेगा. लाइबिलिटी बढ़ रही, we will credit. एक्सपेंस बढ़ रहा, will debit. इनकम बढ़ रहा, we will credit. तो अगर they are increasing, we will be giving same nature. If they are decreasing, above things are what guys? Decreasing, then we will give opposite nature. मतलब अगर asset बढ़ रहे तो we will डेबिट देव, असेट घट रहे तो अपोजिट नेचर इनका है डेबिट, बट घट रहे तो वी शुड गिव अपोजिट नेचर, विल क्रेडिट. लाइबिलिटी बढ़ रही तो क्रेडिट, लाइबिलिटी घट रही तो विल गिव डेबिट. अंडरस्टैंडिंग है. तो सेम ट्रांजैक्शन विल टेक हियर एंड we'll see that entry will be same as per the same both the methods. Clear guys? Now see, if we see the example what we took last time, we took first example as X invested in business 5 lakh as a cash, correct? So as I told, you will have a steps. First step is same, understanding the transaction and taking the two aspect. But now here step will change. Here we have to classify into either of the 5 things, either of the 5 things. Then see increasing or decreasing. If increasing same nature, decreasing opposite nature. First step. Understand the transaction, get the two aspect, then classify into any of the 5 things. If they are increasing, same nature. If they are decreasing, opposite nature. That is the rule for modern approach. So if you see here, X invested in business rupees 5 lakh as a cash, two things will be your same, what we got last time. Two aspect will not change guys, cash and X is the one more thing, but X is the owner, for representing will get a capital. Clear guys? So cash is an asset, cash is an asset, cash is an asset, correct guys? Cash is an asset. And capital, capital is, give me a minute, yeah, cash is an asset and capital is, obviously we have for direct capital as a capital, right? For assets it says if increasing same nature, but we have a rule for increasing same nature, decreasing opposite nature. Now see, when X is investing into the business 5 lakhs, for business cash is increasing or decreasing guys? Increasing. Increasing means same nature. What is that nature? Debit. So we will debit it. And for liability, increasing, decreasing, this is also increasing. Liability is, capital is also increasing. Increasing means same nature. Same nature matlab credit. Understand this once again. Capital was 0 earlier. Now he invested 5 lakh. Owner capital got increased. For increasing, what we have to do? We have to give same nature. What is that nature guys? So for capital, same nature means credit. So capital will get credited. Understanding guys? So entry will be same. Cash account debit to capital. We got the same entry there also. Clear? So what is the steps here? Understand the transaction, get the two aspect. This is common step in both the approach, traditional and modern. But in modern we have to classify any of the 5 things, then see increasing or decreasing and give the nature. Increasing same nature, decreasing opposite nature. Clear guys? Now we can take another example. If you remember, our another example was what? Purchase of building for cash.
Yeah. For another example was purchase of building for cash 3 lakhs. Purchase of building cash 3 lakh. So as we discussed there, we have two aspects. One is cash and another one was, if you remember, building. Correct. So cash is also an asset. Building is also an asset. Correct. So both are asset here. Both are asset. So when you see now, cash increasing, decreasing, guys. Cash is decreasing because cash is going out, right? तो कैश बाहर जा रहा था, कम हो जा रहा है बिल्डिंग को लेने में. कैश इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग तो क्योंकि ऑपोजिट नेचर. असेट का डेबिट है बट ऑपोजिट मतलब क्रेडिट. तो असेट शुड गेट दिस असेट शुड गेट क्रेडिटेड एंड बिल्डिंग इज इंक्रीजिंग. पहले एक भी बिल्डिंग थे, बिल्डिंग इंक्रीज हो गई. इंक्रीजिंग मीन सेम नेचर, असेट है सेम नेचर, डेबिट. So building to cash, we are getting same entry last time also. So understanding guys, entry will not change, just your approach will change. If you see one more example, if you see one more example, last example, payment of rent, right? Payment of rent of so some amount. So we took example as rent paid 5,000, obviously in cash. So what will be the two aspect here, guys? Two aspect, if you remember, one was your cash and another was your rent. Correct. So cash is what, guys? Asset. Cash is what? Asset. Rent is what, guys? From above 5. Rent is an expense. Rent is an expense. Asset. Cash increasing, decreasing, guys, now? Increasing or decreasing? Paying cash will result in decreasing. So this is decreasing. Expense पहले कुछ भी नहीं था, rent आ गया है. Expense is increasing. If asset decreasing, opposite nature is debit, opposite means we will credit. And rent expense increasing means same nature, ante same nature means expense debit. So your entry will be rent to cash. Same entry we got in traditional approach as well. Understanding, guys? So entry will not change, only your approach will change to get that entry. We got that two approach, traditional and modern. So I can summarize now. If we summarize our discussion, to make entry we got two approach, traditional, modern. Traditional is based on accounts and modern is based on the nature, like asset, liability, income, expense and capital. So based on account we got the golden rules there. For personal debit, the receiver, credit the giver. For real debit, what comes to credit, what goes out. For normal debit, all expenses and losses, credit all incomes and gain. And for this modern approach, 5 items we given their balance. Asset and expense will have debit balance, income, liabilities and capital will have credit balance. So this is their normal balance, this is their nature balance, fixed balance. Rule is simple: if they are increasing, same balance; if they are increasing, same nature; if they are decreasing, opposite nature. So what is the steps in both the method? Now in both the method, two steps are common: understand the transaction and get the two aspect. This will not change. So understanding the transaction, getting the two aspect will not change. But now next 3 steps will change based on approach. If the traditional approach, classify into account, apply the rule, get the debit and credit item and make the entry. But in modern approach, classify into which item will fall from any of these 5 above and see increasing or decreasing, give the nature, increasing same nature, decreasing opposite nature. Entry will be the same. Clear, guys?